Hello friends and welcome to Gyan Ganga classes or welcome to class 6 science chapter 14 air around us। और आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में एयर की, what is composed of air, एयर क्या होती है, why it is important, what are its purposes and everything। और इसी के साथ ही ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 साइंस की पूरी करिकुलम का। तो आई होप आपने बाकी वीडियोस देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो हमने इस चैप्टर इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है अबाउट द प्लेलिस्ट, जिसमें है सारे चैप्टर्स, सारे रिविजन्स। आई होप आप उसको जाके चेकआउट कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मेक इट सब्सक्राइब इट एंड लेट अस स्टार्ट। व्हाट वी विल कवर टुडे, वी विल लर्न अबाउट द एयर एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद एयर। व्हाट इज एयर? एयर इज एन इनविजिबल गैसियस मटेरियल दैट सराउंड्स द अर्थ। एयर क्या है? इट इज ऑल ओवर। हम कहते हैं ना एयर इज एवरीवेयर, इट इज सराउंडेड ऑन द अर्थ, इट इज एन इनविजिबल गैसियस मटेरियल। ओके, इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज द नीड फॉर एयर? एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू लेते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो एयर के थ्रू होते हैं। तो हमें एयर जो है बेसिकली इट इज़ ए different layer of airs compose a atmosphere. So atmosphere refers to the blanket of air that surrounds the earth. Okay, air can be found in all places. Although we cannot see air, we can feel it. Air is everywhere. हम उसको feel कर सकते हैं. We use it for breathing, especially the one of the most process of the living organism. The wind is the movement of air. Air जब जोर से चलती है, we call it wind. एंड फिर धीरे से और भी जोर हो जाती है, वी कॉल इट स्टॉर्म। एयर टेक्स प्लेस एंड इज फाउंड इन वाटर एंड डॉट। एयर क्या है? एयर टेक्स स्पेस। इफ एनी ब्लैंक देयर इज अ एम्प्टी कंटेनर, यू जस्ट इट इज द लिड इज ऑन, बट स्टिल इन द देयर इज नथिंग इन बिटवीन, बट स्टिल देयर इज इन एयर, देयर इज एयर इन बिटवीन दैट। ओके, इफ देयर इज अ ग्लास, इफ इट्स यू सी इज एम्प्टी बट इट इज फुल ऑफ एयर। ओके, so what is the need for air? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor are the gases that makes up air. There are some more gases that combine to makes up air. The life on earth depends on the atmosphere. हम लोग की सारी चीज़ की लाइफ, from plants to animals to humans, everyone is dependent on air, that is atmosphere of the layer around of air around the earth. Aquatic species breathe air dissolved in water through the help of its body, and plants and animals rely on each other for oxygen and carbon dioxide exchange from the air. Plants produce oxygen in photosynthesis and both respire oxygen. Plants respire through the lenticels, that is on the body of the plant, that is especially below the leaf, and especially in that the cells that help plant to breathe in is stomata. And animals do breathe with various organs, like we breathe with lungs. We have learnt about it. उस वीडियो उस चैप्टर का भी डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो हम इसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वाटर डिजॉल्व एयर डिजॉल्व इन वाटर के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? You can see this diagram here. This is the layer of atmosphere. This whole spheres combine to make the atmosphere. And इसके बाहर there is universe. So the base layer that touches the earth is troposphere. Then there is an ozone layer to protect it. Then there is a stratosphere and mesosphere. Then there is a Kármán line. Then there is thermosphere. There is exobase. There is exosphere. And then there is the universe. Clear it? The nearest layer to the earth, the shortest layer is the troposphere. इसी में सबसे ज़्यादा नीड ऑफ एयर है, वही हमारा बेसिकली वो सब कुछ हमको उसी के थ्रू मिलता है। वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव क्लाउड्स, रेन एंड एवरीथिंग दैट इज इनसाइड द ट्रोपोस्फियर। ओके, नाउ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एयर किस किस से बनी है? The main constituent is nitrogen and oxygen. You can see the graph here. Nitrogen covers 78%, oxygen covers only 20%, and rest other gases combine up to 1%. Rest other like carbon dioxide, water vapor, other gases, argon, inert gases, etc. make the remaining 1%. Nitrogen is used for
by plants in order to grow themselves. We use nitrogen in the soil to make the plants grow better. Oxygen is used by all the living beings to breathe, and it helps to burn food. It also helps in the burning of the species of the things. Carbon dioxide, it is help during respiration. Plants and animals absorb oxygen and create carbon dioxide. Photosynthesis is carried out by green plants that takes in carbon dioxide and release oxygen. Okay. Water vapor is formed when water evaporates, and due to humidity, water evaporates into air, forming water vapor, and that water vapor form cloud, and then that cloud again brings water down to the earth. Clear है कैसे होता है? That is the water cycle, and that also works due to air. What are the constituents of air? Next is the dust and smoke. Smoke comprises of small number of gases that have fine dust particles, and it's really dangerous. The number of dust particles in the air changes throughout the time and location, place to place. कहीं पे ज़्यादा dust होती है, कहीं पे कम. So it is also a part of air. Now the importance of air. एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अभी तुमने कुछ पॉइंट्स पढ़े ही थे, लाइक वी ब्रीथ इन, प्लांट्स मेक food, plants breathe, animals breathe. Then for the burning of things, burning is the process that is done in the presence of air. If there is no air is present, that is, if we just burn a candle and just shut it down with a glass tumbler, that no oxygen again comes to in touch with it, so it will just blow off, and the candle, which is still burning in open air, it continues to burn. Burning is done process in the presence of air, especially oxygen. Breathing necessitates the presence of air. We need air to breathe. Plants require air to produce food. We all know it. Birds fly across the air due to air pressure. Planes fly in air due to air pressure. Wind is a term for moving air. Windmill rotates due to air and that wind, and then that wind energy is such produced into electrical energy. So there are so many importance. Air helps in the rapid evaporation of sweat, which helps us cool down. Air helps in evaporation, and then that evaporated water vapor in contact to dust and smoke become cloud, and then cloud brings water down to the earth. It helps water cycle. So these all are the importance of air. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टू द पॉइंट लगी होगी, और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे. तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए. एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.